Hello students, welcome to you in my YouTube channel Sri Shyam Study Point, and I hope that you all are safe at your home and following the instructions of Indian government and WHO. So today we will start a new chapter, the sexual reproduction in flowering plant. The second chapter of the first unit in +2 biology, the sexual reproduction or reproduction in flowering plants. So, reproduction in flowering plants. फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, किस तरह से फ्लोरिंग प्लांट्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इन योर फर्स्ट चैप्टर द रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन यू विल स्टडी अबाउट द asexual mode of reproduction, in which you study about the different methods, different modes of asexual reproduction and the different way in which the plant reproduce, plant and organism, any organism reproduce by asexual method. So today we will start the new chapter with sexual reproduction. Okay, so in the flowering plants के केस में हम ये पढ़ते हैं कि there are a reproductive part, and what does that part? That is flower. As you all know, flower is the reproductive unit. We call it reproductive unit of flower of plant. This is the reproductive unit. Why we call it reproductive unit? Because the flower contain all the reproductive parts of plants. Plants के जितने भी reproductive parts होते हैं वो flower के अंदर present होते हैं. Now we will discuss what is the flower. Flower आखिर है क्या, होता क्या है? What is the flower? Actually, flower is a modified shoot. Flower is a modified shoot. I will explain it why it is called as modified shoot. Modified shoot. Flower is a modified shoot. Why it is called so? Because you all know about the shoot. In 9th class or +1 class, you study about the tissues in plants. Plants के tissues के बारे में आपने पढ़ा है. तो this is a shoot and this is the tip part of the stem or shoot, and these are the nodes and internodes. Okay, so at the tip part, here is the meristematic tissue. Here is the meristem, and at the bud there is intercalary meristem, and lateral part में क्या होता है, lateral meristem होता है. तो 3 meristematic tissues के बारे में आपने पढ़ा है, +1 क्लास के अंदर भी पढ़ा है, 9th क्लास के अंदर भी आप पढ़ते हो meristematic tissue. Now how the shoot or this shoot will modified, how this shoot will modified to a flower, कि किस तरह से ये shoot modify होगी flower के अंदर, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. पहले तो अभी देखो यहां पर क्या होता है, there are meristematic tissue. Meristematic tissue means there are dividing cells. They can divide continuously. Dividing cells. Now this stem is modified and compressed, and how it looks like this. These tissues are compressed. Now here at this point, look at this point. Here is the apical meristem. Here is the nodes, means intercalary meristem. Here is the nodes. Okay, these are the intercalary meristem. Now apical meristem यहां पर है at the tip, and intercalary meristems buds है like this, because ये compress हो गया है. If you compress it, okay. Now what is this structure called? This structure अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. तो this is all about the how the stem is made modified. Now हमारे पास एक swollen structure आ चुकी है. At the base of the flower वो होता है, आपको नाम याद आ रहा होगा, शायद आपने पढ़ा हो. This is the thalamus. It is also called as thalamus or
receptacle, which is the basal part. It is in the base of flower. Base of flower means all the floral parts are arise from this thalamus. इस थैलेमस से क्या होते हैं, सारे के सारे फ्लोरल पार्ट है वो क्या है, इस थैलेमस से अराइज होंगे. वो किस तरह से अराइज होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. व्हाट आर दीज? जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, there are mainly two types of parts of flower. That is the accessory parts, accessory and essential. Accessory parts और essential parts. Accessory parts के अंदर क्या होता है अपना, कि accessory parts में आते हैं reproductive parts. इसके अंदर आते हैं stamen and pistil. Stamen and pistil, these are the accessory parts, and the essential parts are the calyx and corolla. Calyx and corolla are the essential parts. So we will discuss about these parts one by one. As you know, the calyx and corolla, आपने प्लस वन के अंदर इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है. कैलिक्स और कोरोला के बारे में हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं स्टेमन और पिस्टिल की. So stamen is the male reproductive part and pistil is the female reproductive part, as you all know that stamen and pistil. अभी these floral parts makes the different whorls in the flower. फ्लावर के अंदर डिफरेंट वॉल्स के अंदर ये पार्ट होते हैं. तो व्हाट डज दे वांट? तो हम बाहर से भी स्टार्ट कर सकते हो, अंदर से भी स्टार्ट कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट द आउटर मोस्ट पार्ट. तो द फर्स्ट पार्ट, द आउटर मोस्ट वॉल इज सेपल. ओके, these are the, I am drawing roughly the diagram of flower because you all know very well about this. This is the sepal, and these are the green colored part, which, and what is this function? It protect the flower. It protect the flower in its bud stage. जब फ्लावर बड स्टेज के अंदर होता है तब ये क्या करता है, सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं. दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड. सबसे बाहर वाला जो वर्ल्ड है वो क्या होता है, सेपल्स का होता है. ओके, नाउ आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या होता है, ये आता है अपना कैलिक्स और singly it is called as petal. This is the colored parts of a flower, and this is the second whorl of the flower. Second whorl ये बनाते हैं फ्लावर का. फर्स्ट whorl है ग्रीन कलर का, सेपल का. सेकंड whorl है पेटल का, जो कि कलर्ड पार्ट होते हैं. What is the function of these petals? They attract the insects को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पोलिनेशन के लिए, क्योंकि जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, दैट इज द पोलिनेशन, जो इंसेक्ट्स हैं दे कैरी द पोलन फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन टू द पिस्टिल, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल. तो वो उसके लिए क्या होता है, इंसेक्ट्स को जो अट्रैक्ट करने वाला पार्ट होता है, दिस इज द पेटल एंड दैट इज द कलरफुल पार्ट. ओके, तो उसके बाद में आता है अपना थर्ड वर्ड. दीज आर द accessory pigments, accessory parts of the flower. They does not have any function after the fertilization. fertilization के बाद में इनका कोई फंक्शन नहीं होता. जैसे कि आप
आपने पढ़ा, सेपल्स हैं वो ओनली बड स्टेज के अंदर फंक्शनल होते हैं, पेटल्स हैं वो टिल पोलिनेशन तक फंक्शनल होते हैं, उसके बाद में पेटल्स का कोई काम नहीं होता और ना सेपल का कोई काम रहता है, तो दे वेट ऑफ फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से वो गिर जाते हैं, निकल जाते हैं और रह जाते हैं पार्ट्स कौन से, एसेंशियल, सॉरी दिस इज these are accessory parts and these are essential part, okay, तो these are the accessory parts, accessory parts होते हैं ये हेल्पर होते हैं, मेन पार्ट्स जो है वो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, स्टेमन एंड पिस्टिल, these are accessory parts, they help in the reproduction में, pollination में, fertilization में ये हेल्प करते हैं, तो ये आता है। उसके बाद में क्या होता है, द थर्ड वर्ड ऑफ फ्लावर इज आई एम ड्रॉइंग ओनली सम स्ट्रक्चर, देयर नंबर आर कॉमनली लार्ज इन द फ्लावरिंग प्लांट, द थर्ड वर्ड इज ऑफ स्टेमन, स्टेमन का थर्ड वर्ड होता है, तीसरे वर्ड में स्टेमन आता है, स्टेमन हैज टू मेन पार्ट्स, द एंथर एट द टॉप एंड फिलामेंट on the stalk is the stalk on which anther is present. So this structure, these both structure are called as stamen and this is the male reproductive part, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद में क्या होता है, the innermost word that is the innermost part, that is the pistil or female reproductive part. It has three main parts. The uppermost stigma, it is the plate which receive the pollen grains, जो pollen grains को receive करेगा. Then a stalk-like style which connect the stigma to the basal swollen part ovary where the ovule or the female reproductive or the female gametes are present. Okay, so these three are part of a pistil, the female reproductive part. So this is the main structure of flower and these are the main parts, essential and accessory parts. ध्यान रखें, essential parts जो है वो stamen और pistil हैं और accessory parts हैं वो calyx और corolla है. These are the parts which is involved, completely involved in the sexual reproduction. Sexual reproduction के अंदर ये involve होंगे and these parts only help in the sexual reproduction. Like calyx है वो help कर रहा है, कैलिक्स एंड कोरोला है वो हेल्प कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन देयर बड स्टेज एंड फॉर अट्रैक्शन टू द ऑफ द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. माइक्रोस्पोरोजेंसिस इसके बाद में हम करेंगे. माइक्रोस्पोरोजेंसिस मेल गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, माइक्रोस्पोर भी उसको बोलते हैं. तो माइक्रोस्पोरेंजियम और उसकी जो स्ट्रक्चर है हम करेंगे. तो जैसे कि आपको पता है कि एंथर और स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज द स्टेमन. इट हैज टू पार्ट्स. It is bilobed. The anther, it has most commonly it has two lobes, but in some cases like the family of Malvaceae there are only single lobe. So it may be जो anther है it may be monothecous and it may be dithecous. जो मोस्ट कॉमनली जो केसेस हैं, मोस्ट कॉमनली जो फ्लावर होते हैं वो डाइथिकस होते हैं. मोनोथिकस है जैसे एग्जांपल मालवेसी फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्म. मालवेसी फैमिली में जितने भी फ्लावर आते हैं, जितने भी प्लांट्स आते हैं वो किस में आते हैं, वो मोनोथिकस एंथर उसका होता है, ओनली वन लोब होती है. और डाइथिकस एंथर में क्या होते हैं, बाकी ऑल जितने भी एंजियोस्पर्म है वो डाइथिकस में आते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सारे डाइथिकस में आते हैं. तो मोस्ट कॉमनली जो
एंथर होता है वो डाइथिकस होता है इन द फ्लावरिंग प्लांट। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डाइथिकस एंथर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको माइक्रोस्पोरेंजियम पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है। तो यहां से हम जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये ड्रॉ किया है एंथर की, बाइलोब्ड एंथर। देखो ये जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसके अंदर आप पढ़ते हो कि ये बाइलोब्ड एंथर है, वो किस तरह से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो बेसल है कि जो पिगमेंट है, जो ये फिलामेंट है, ये किस पोजीशन पे जुड़ा है, तो उसके बेस पे भी क्या होते हैं, जो एंथर है, जो स्टेमन है, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू पार्ट्स, प्रॉक्सिमल एंड, दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। ये सारी चीजें आप जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो उस टाइम में आपको ये यूज होती है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है, द एंड विच इज नियर टू ओरिजिन एंड वी all know that this end is attached to the thalamus part। ये thalamus part जहां से ये origin होता है वहां पर होता है। distal end which is away from the origin से away होता है। and जो बाइलोब्ड एंथर है उसके बीच में क्या होता है, एंथर के बीच में क्या होता है, बाइलोब्ड एंथर किस तरह से बनता है कि एंथर हैज ए कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड connective tissue। here is a connective, it is called as singly connective, which is made up of a sterile tissue and makes the anther bilobed। this is the sterile tissue and it makes the anther bilobed। okay, so it is sterile because the cells of this tissue, the cells of this connective tissue does not take part in the reproduction। so this is all about the anther। उसके बाद में फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है। ये आपने बेसिक लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। तो ये स्टेमन की मेन स्ट्रक्चर थी। अब हम उसके बाद में क्या आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की स्टडी हम करेंगे। स्टडी करने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको टाइम टू टाइम आप मेरे नेक्स्ट अपलोड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे भी लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।